नमस्कार, मनी9 पर आप देख रहे हैं आज का सौदा। मैं हूं साक्षी बत्रा। इस शो में हम आपको बताते हैं कि बाजार की किस तरीके से शुरुआत हुई है और आज का ट्रेड कैसे रहने वाला है। खासतौर पर आपको ये भी बताएंगे कि कौन से ऐसे पॉकेट्स हैं और स्टॉक्स हैं जहां पर फोकस करने से आपके पोर्टफोलियो को फायदा मिल सकता है। और ये बताने के लिए हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय पुरोहित है हमारे साथ, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से। जय, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। सबसे पहले योर टेक ऑन द मार्केट ओपनिंग। ऑफ कोर्स कॉशियस नोट पर हम ओपन हुए हैं, 0.5% तक का डिक्लाइन हमें बेंचमार्क इंडिसेज पर देखने को मिल रहा है। डेफिनेटली वीक ग्लोबल क्यूज तो है ही। क्या आपको लगता है कि अभी भी डोमेस्टिक क्यूज काफी क्लियर नहीं है और अभी भी एक रेंज बाउंड ट्रेड वोलेटाइल सेशन देखने को मिल सकते हैं? या गुड मॉर्निंग साक्षी। अगर ओवरऑल देखेंगे तो रेंज बाउंड ही हम लोग ट्रेड कर रहे हैं और निफ्टी लास्ट 2 महीने से एक रेंज में अटका हुआ है और यहाँ पे वॉलेटिलिटी भी काफी हाई है। तो विद इन द रेंज वॉलेटाइल मूव है वो कंटिन्यू होना चाहिए। बट ओवरऑल अगर हम लोग मार्केट ब्रेथ देखेंगे तो एक चीज पॉजिटिव जरूर देखने के लिए मिलती है कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो है वो बुल्स के फेवर में है। कल भी मार्केट डाउन था, आज भी मार्केट नेगेटिव है, बट जो एडवांसिंग काउंटर्स है वो डिक्लाइनिंग काउंटर से ज्यादा है, जो कहीं ना कहीं पे एक पॉजिटिव संकेत है ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट के लिए। साथ ही साथ इफ वी लुक एट द ऑप्शन चेन देन आज जैसे कि वीकली एक्सपायरी है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि 14,700 750 ये एक जोन आज के लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा और यहाँ से ऑलरेडी हम लोग वो सपोर्ट में ट्रेड करें तो यहाँ से एक बाउंस डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है जो निफ्टी को लगभग 14,850 तक ले जा सकता है। तो आज के लिए जो भी इंट्राडे ट्रेडर्स है या जो ऑप्शन ट्रेडर्स है वो 14,750 का कॉल ऑप्शंस बाय कर सकते हैं। अभी लगभग 38-39 रुपीज चल रहा है, उसको बाइंग करके चले। 20 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा और अपसाइड में मुझे लग रहा है कि वहां पे 80 to 100 तक के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, निफ्टी बैंक पर अभी आपकी क्या राय रहेगी? यहाँ पर अभी भी वीकनेस देखने को मिल रही है, क्या यहाँ से वीकनेस और एक्सटेंड होती है? लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप देखेंगे तो केवल एक पॉकेट है निफ्टी बैंक का, जो है पीएसयू बैंकिंग स्पेस, जो कि लगातार परफॉर्म कर रहा है पिछले कुछ सेशन से और आज भी 1% तक की तेजी दिखा रहा है। तो इस स्पेस में किस तरीके से इन्वेस्टर्स को अप्रोच करना चाहिए? देखिए, अगर ओवरऑल पीएसयू सेक्टर एज ए होल देखे जहाँ पे बैंकिंग भी आ गया और दूसरे पीएसयू भी आ गए तो वहां पे एक अच्छी खासी तेजी देखने के लिए मिल है लास्ट फ्यू डेज से। ओवरऑल अगर बैंक निफ्टी की फर्स्ट बात करेंगे तो वहां पे डेफिनेटली थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है लास्ट 2-3 दिन से। एंड 32,400 का एक मेजर सपोर्ट है। अगर 32,400 रीच करता है आज के दिन में देन फॉलिंग जो सेलिंग प्रेशर है वो और एक्सीलरेट हो सकता है। जबकि बात करें अगर पीएसयू इंडेक्स की या पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स की तो यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए और जो आउट परफॉर्मेंस जो कल के दिन में था वो आज भी और कंटिन्यू होना चाहिए। तो डेफिनेटली लार्ज कैप्स के साइड में ही ज्यादा बाइंग के साइड में रहना चाहिए, जैसे कि एसबीआई हो गया। स्टेट बैंक यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा है, 350 355 के लेवल्स पे काफी कंसोलिडेट भी किया है एंड एक इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे लगभग 385 390 तक का मूव ये दिखा सकता है। तो डेफिनेटली एसबीआई में बाइंग करके चल सकते हैं। 355 का स्टॉप लॉस रहेगा और अपसाइड में 385 का टारगेट रहेगा। ठीक है, एनर्जी स्पेस में भी आपसे एक राय लेना चाहते हैं, क्योंकि लगातार हमने देखा है कमोडिटी स्पेस जो है वो बजिंग है, बिकॉज कमोडिटी प्राइसेस आर एट एन ऑल टाइम हाई। भले ही वो कुछ एग्री कमोडिटीज की बात करें, मेटल्स की बात करें, क्रूड की बात करें, इस पूरी बास्केट में आप कहाँ नजर रख रहे हैं? देखिए, एनर्जी स्पेस ओवरऑल काफी स्ट्रांग ही है और इनफैक्ट अगर हम लोग ओएमसीज की बात करेंगे या फिर कुछ स्टॉक्स आ गया जैसे पावर ग्रिड आ गया, एनटीपीसी आ गया, यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम है। इनफैक्ट पावर ग्रिड ने कल एक बुलिश फ्लैग पैटर्न से ब्रेकआउट भी दिया और यहाँ पे लगभग 245 तक जाने की पूरी संभावना है। तो पावर ग्रिड हो गया, सेकंड जो प्रीफर्ड स्टॉक रहेगा वो है एनटीपीसी एंड जो थर्ड स्टॉक रहेगा पूरा एनर्जी स्पेस से वो है ओएमसीज में, जो कि है हिंद पेट्रो। सो overall we can see good momentum in energy space looking at the all these factor as well as the chart structure and one can participate in the same. Sure. Let's now come to your specific recommendations for today. What are you suggesting investors to buy today? And is this a good day? What kind of upside can we expect? Since I'm expecting market to move up, so all three recommendations are on the buy side. The first one is the Tata Motors. Tata Motor has given a
range breakout. It is sustaining well above the range, and now it is approaching towards 340, 345 kind of levels in coming days. So one can look to buy with a stop loss of 305. The second stock would be Havels. Havels का overall chart structure काफी अच्छा है. It was moving in a range. Yesterday it gave a breakout. It managed to close above the breakout levels. Though today we are witnessing some kind of corrective move, but this corrective action shall be used as a buying opportunity. We can again see daily towards 1075 levels. So one can buy with a stop loss of 1010. And the third stock would be Gujarat Ambuja Export. So GAEL overall chart structure is quite positive. It is trading near its multi-years high. In fact, it gave a range breakout yesterday. Overall volumes are quite good on the upticks. So I'm expecting the outperformance to continue towards 190 kind of levels in Gujarat Ambuja Exports. So one can buy with a stop loss of 169. Okay, thank you very much, Jay, for sharing your stock recommendations and your market outlook with all our viewers right now. 3 long picks from Jay's side in today's trading session as well, where you can definitely find good opportunities to buy and strong upside from the current levels as well. Let's move on to see how the markets are trading at this point in time. Half an hour away from the opening levels. Of course, the opening levels were with the gap down. Cautious note is what we had seen the markets opening with, and that was the expectation since we had seen weak global cues beats the US markets or the Asian markets, which were trading in the red right in the early morning trade as well. So right now, if you see the benchmark index, Sensex is down 360 points. That's down about 0.7% in trade, 48,801. That's the level at which the Sensex is trading at. Nifty 50 also, if you look, almost 100 point of loss over there. 14,758 is the level at which the Nifty 50 is also trading at. In the banking space, you can clearly see Nifty Bank is down about 0.64% as well. Almost in tandem with the benchmark index is down over 211 points at this point in time. Now, yesterday's gain, our mid-cap index is actually just trading flat with a negative bias at this point in time. So some kind of profit booking stepping in. But small cap index is still holding up, although it is underperforming the markets at this point in time. 0.24% of an uptick and 54 points of an addition. If you can clearly see for the small cap index at this point in time, 22,660 outperformance continues from the small cap stocks at this point in time in trade. When we talk about the sectoral movers, let's quickly see how the position is divided, and it's clearly a divided screen between red and green. Most of the stocks are in the red. If you clearly see the auto index, the financial services index, that's down about 0.8% in trade. Private banks are really dragging down the Nifty Bank at this point in time. 0.5% lower for the IT index as well. That's something that's been losing momentum at this point in time in the last couple of sessions. FMCG is absolutely flat right now. The metal index is just holding up above 0.2% of gains for the metal counters right now. The pharma index, after yesterday's subdued trade, the muted movement even continues in today's trading session. But what's holding up is actually the real estate stocks. That's up about 0.6% in trade right now. And the PSU banking basket, which is the leading indicator right now. And the leading index, PSU banking index, is up about 1% in trade right now. Looking at the gainers and the losers picture also right now, when you see a Nifty 50, you'll be clearly seeing some of the power companies like Power Grid, NTPC holding up the momentum, 2.5% uptick for this one. Tata Motors continues to gain, and this is one of the picks that even Jay has recommended for all the traders as well. ONGC and L&T, the other stocks that are still holding up about 0.5% to 1.5% in trade at the moment. As far as the losers are concerned, when we talk about the Nifty 50 losers, we'll clearly see some of the companies. HDFC continues to drag the markets. It was a loser in yesterday's trading session and continues with this downtick momentum, 1.7% down to this one. Shree Cement, Hindustan Unilever, again from the FMCG space, not performing. Auto space, M&M is also down about 1.2% in trade, and Tech Mahindra is down over 2% in trade at the moment right now. But the markets are pretty nervous at this point in time. And some kind of cautiousness is definitely seeping into the markets because there is no clear direction that the markets are able to find at the moment. However, Jay says that he does believe that the markets will take the momentum higher from here on as well, going forward from here. And he does expect that the markets will move up, and therefore he's also been giving you positive calls on the buy side, which definitely investors can watch out for. But definitely remember that tomorrow is a market holiday, and therefore this is a truncated week, and we may see some kind of volatility stepping in, especially because the day advances, the weekly expiry day advances to today. So second half of trading session will be extremely important to watch out for all the traders as well. We'll keep you posted with all the market movement and the personal finance news. So stay with us on money9.com.